how can an easy section also be a decider section? इंग्लिश की टेक्निकलिटीज में नहीं जाते हैं. ग्रामर को स्टूडेंट्स डोंट स्टडी राइट फ्रॉम स्क्रैच एंड दे डोंट प्रैक्टिस इनफ. सो कंसिस्टेंटली इफ यू वर्क ऑन योर वोकैब, इफ यू रीड समथिंग एंड इफ यू कीप दीज थिंग्स इन माइंड, आई एम श्योर बाय विद टेस्टिंग आप थोड़ा थोड़ा टेस्ट भी करते रहोगे तो consistently going through it is definitely going to work a lot. Even the ones which they were not very sure about, fine, and thereby they ended into negative marking. So the approach is simple. वर्बल एबिलिटी ने हर साल स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे सरप्राइजेस दिए हैं जो या तो उनकी बैंड बजा देते हैं या तो उन्हें सबसे आगे लाकर खड़ा कर देते हैं. अब कट ऑफ्स को ही देख लो, एक ऐसा रोलर कोस्टर राइड है जो शायद शेक्सपियर भी डिकोड नहीं कर सकता. सो टू अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद इंग्लिश एंड मोर स्पेसिफिकली टू गेज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्बल एबिलिटी सेक्शन इन आईपी मैट, वी हैव विद अस सना मैम हियर टुडे, who has been tutoring students for IPMAT preparation for several years now. Let's see her viewpoint when it comes to dealing with the verbal ability section for IPMAT. Ma'am, welcome to this episode. कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. Thank you, Shikha. Hi everyone. Thank you for having me here. Very well, ma'am. My first question to you is कि ma'am सबसे पहले तो ये इंग्लिश कैसी बला है. मतलब आई हैव ऑफन हर्ड स्टूडेंट्स सेइंग कि दे फाइंड इट द इजीएस्ट ऑफ ऑल द 3 सेक्शंस बट हार्ड टू डिकोड. बट एट द सेम टाइम हाउ कैन एन इजी सेक्शन ऑल्सो बी अ डिसाइडर सेक्शन? Okay, fine. First of all, it is no bala. Okay, it is yes intriguing. You've got to have the right approach and understanding for the English section. And that is why, despite being easy to some, again, I would like to highlight the fact that it's not easy to everyone. Yeah. People who have had a very sound English background in terms of, going to the best of the schools and getting the exposure, they find it easy, but still, they're okay with the English fluency and they have the English know-how, but then they also are not able to score that well. So Yeah. this is the point exactly. Why does that happen and how does it turn out to be the deciding factor? The reason is they have a very superficial approach to their preparation. Many of them are very overconfident. Okay, many of them solve English with their gut feeling. So they don't really understand the right approach. They don't even know the nuances of tackling the section. Okay, so it becomes a deciding factor because the handful of them who meticulously work on English in a consistent way, they are able to make it. So मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने 150 yes and not just 1 or 2, many. IPMAT इंदौर में they scored, they cracked 150, 148 in English because of which their entire score skyrocketed. So it turned out to be a deciding factor for them. So with the right approach and the right technique and consistency, this section will take you really far. This will take you to places. मैम जैसे यू जस्ट सेड कि स्कोर्स बहुत अच्छे आते हैं स्टूडेंट्स के इंग्लिश में, बट देर इज़ अ पैटर्न. मतलब 2022 में व्हाट आई सॉ वाज कट ऑफ 112 था, जबकि प्रिडिक्टेड था समवेयर टू बी अराउंड 95. देन 2023 में इट वेंट अप द हिल टू 125, ऑलमोस्ट डबल. तो स्टूडेंट्स नेचुरली 24 में पैनिक करने लग गए. पर हमने क्या देखा कि 24 में कट ऑफ वॉज 113. तो व्हाट शुड स्टूडेंट्स डू? Firstly, don't chase the cutoffs like this. See, when you get a paper, normally what students do, they think that, okay, fine, last year the cutoff was 125. They calculate, they have their calculation. Now, students are really smart. So they feel that, okay, fine, so I will have to make these many attempts to score this much and to clear the cutoff. Now, they don't really gauge the level of the paper then and there. See, the level of difficulty is bound to vary. So you cannot go with a road map that, मैं तो इतने question लगाऊंगी ही लगाऊंगी. What if it is difficult? And so many students landed in soup because of this. They unnecessarily attempted questions, even the ones which they had to leave, even the ones which they were not very sure about. Fine. And thereby they ended into negative marking. So the approach is simple. Prepare very nicely. PYQ solve करो. प्रैक्टिस करो, अपनी वीकनेसेस हटाओ, अपनी स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करो, ठीक है, और कंटिंजेंसी मैनेजमेंट करो पेपर वाले दिन. डोंट गो विद एनी प्रायर assumptions that I have to hit this score. Do as many as you can, but maintain your accuracy.
That's the, I would say, the mantra for getting it right. बट आपको नहीं लगता कि इंग्लिश इज लाइक वेरी वेरी वर्बल, मोर स्पेसिफिकली इज वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल फॉर सम स्टूडेंट्स? मतलब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात करी है, व्हेन दे कम आउट ऑफ द एग्जाम हॉल दे कॉल एंड टेल मी कि मैम बहुत अच्छा गया हमारा, बट देन रिजल्ट वाले दिन पर मैंने देखा कि टेंस्ड है बच्चे. एंड एट द सेम टाइम जिन स्टूडेंट्स ने मुझे ये बोला कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, उनके कट ऑफ क्लियर हो गए. तो स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू ग्रास्प द रियलिटी ऑफ द एग्जाम. Please help them over there. Here, I would like to humbly admit that yes, English is a deceptive area, and hence again, it's a deciding factor also. Why is this so deceptive? Because English में attempt करना बहुत आसान होता है. Anybody can attempt, as many questions as possible, but you have to attempt it accurately. Now, why does that happen? See, you've got to understand that the options are so close that, every option looks good. Students are, मैंने भी experience किया है, that they're like, मैम मैंने तो फोड़ के आए हैं, बहुत ही अच्छा पेपर हुआ हमारा. Why does that happen? Because, see, options are framed like that कि they are very close. RCs में, para completion में, para jumbles में, fine. Grammar students do intuitively. What looks good, what sounds good, ऐसे ही पूरा अप्रोच चल रहा होता है. इंग्लिश की टेक्निकलिटीज में नहीं जाते हैं. ग्रामर को स्टूडेंट्स डोंट स्टडी राइट फ्रॉम स्क्रैच एंड दे डोंट प्रैक्टिस इनफ. सो नॉर्मली व्हेन यू डू थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई हैव बीन स्पीकिंग एंड व्हाट आई हैव बीन लिसनिंग, so our language is full of Indianisms, but in the paper the kind of grammar comes is technical. One S here and there and it goes for a toss. So इतनी fine subtleties और nuances होते हैं कि for that student has to know the technicalities. Since they don't know, उनको लगता है कि ठीक है, जो एक distractor option होता है वो उसको select कर लेते हैं and they are very happy कि हमने बहुत सही मार्क किया है. यही प्रॉब्लम आरसीज में भी आता है. मतलब आरसीज के केस में दे सी कि दो ऑप्शंस इतने सिमिलर हैं दैट दे गेट कंफ्यूज कि आंसर जापान था कि चाइना. इस मिस्ट्री को स्पेसिफिकली व्हेन आई टॉक अबाउट आरसीज कैसे डिकोड कर सकते हैं स्टूडेंट्स? Okay, now this is a question that I very frequently encounter. See, when it comes to passages, so definitely there are going to be two options which are framed very, very closely. And that's a deliberate trap, okay? So there are multiple ways to attempt that. First of all, when it comes to those two options, compare and contrast them. Fine. Carefully evaluate what is the difference between them. And सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किसी भी आंसर को मैं सही तब मानूंगी इन अ पैसेज व्हेन देयर इज मैक्सिमम एविडेंस फ्रॉम द पैसेज. हम जब इन्फ्रेंसेस निकाल रहे होते हैं तो हम बहुत अक्सर ऐसा करने लग जाते हैं कि आर इंटरप्रिटेशन एंड व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द एंटायर थिंग एक हेजी पिक्चर लेके चल रहे होते हैं. बट close choices के case में you'll have to see which one is leaning more towards what the passage is saying. So number one, it has to be completely in sync with what the passage says. Okay. Secondly, distortions check करिए. Watch for distortions. एक आध कोई option होता है which is slightly tweaking the idea as compared to what is given in the passage. Look for, sometimes we have to go down to a word for word breakup of the entire option, and you have to check each and every word sometimes. Is there something which makes an option factually wrong? Is there something which makes an option extreme? Right? Is there something which makes an option slightly ambiguous? Sometimes it happens that both the options are as such correct, but one is more relevant as compared to the question asked. है तो दिए तो दोनों पैसेज में, बट जो एक ऑप्शन है वो ज़्यादा रेलिवेंट है, ज़्यादा डायरेक्टली क्वेश्चन को आंसर कर रहा है. तो ये कुछ चेक्स हैं, ये कुछ एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज हैं, एंड दे कम ओनली विथ प्रैक्टिस. द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू नेवर शुड मार्क एनी ऑप्शन जस्ट बिकॉज इट लुक्स गुड, जस्ट बिकॉज योर इंट्यूशन सेज दैट. दिस इज अ वेरी लॉजिकल थिंग. इंग्लिश भी लॉजिकल होता है. राइट मैम. फॉर समवन, फॉर मी रीडिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी. In that case, what should I do? Why is it not cup of tea? See, I would simply say, take baby steps. People who give flat recommendations, read Sapiens. अरे बंदे को हिस्ट्री का H ना पता, ना interest. So why is it that people, and many trainers often do that, they Google up some names and they simply ask students to go through those heavy tomes.
See, read something which interests you, which fascinates you. Take baby steps. You just decide कि यार चलो मेरे को रीडिंग बिल्कुल नहीं पसंद, चलो मैं 15 मिनट पढ़ूंगी. अब वो 15 मिनट में मैं क्या पढ़ूंगी? ओके, मुझे स्पोर्ट्स पसंद है तो मे बी अ स्पोर्ट्स बेस्ड आर्टिकल, मे बी अ जनरल न्यूज. आई विल स्टार्ट विद दैट. Okay, and make it a habit. However, okay, I like reading romance. Okay, कोई romantic novel पकड़ लो. Novel बड़ी लग रही है आपको, you just read a small article. You just read a small piece of something. Consistency is the key. And don't you run away. See, अगर हमारा कोई डर होता है, हम उससे जितना भागते हैं वो उतना ही बड़ा होता जाता है. And a point comes when you face it and you realize कि ये तो कुछ इतना बड़ा था ही नहीं, है ना? So it's just about, you know, facing your fear and reading. Nobody's asking you to read huge volumes at a stretch. You can divide it comfortably and you can start reading something what you like. But yes, here comes a caution. Over a period of time, I would recommend you to diversify. Don't stick to just one genre. But for the first 2 months, you can easily read whatever you like. Right. Ma'am, what should be the strategy for students who belong from a vernacular background or who come from small towns? मतलब जिनकी English is not up to the required levels. What should students do? All right. So the first thing I would suggest is that there are 2 aspects. Number one, if they have the fear, which often they have, so they have to familiarize themselves with the language. Cramming up things are not going to take you anywhere. So let's keep it very simple. You have to create an environment of English. You have to create an atmosphere of English because you have to be comfortable with the language. This paper tests your comfort level with the language. और वो अभी है नहीं, तो वो easily दिखती है. आप superficially रट के चीज़ें जाते हो, वो आपको ज़्यादा help नहीं करता. So first and foremost, I would simply say that they must listen to podcasts, watch some documentaries in English so that they start getting the feel of the language. Read, but read short stories. स्टार्ट करो शॉर्ट स्टोरीज से. इफ यू लाइक फिक्शन, मतलब आई थिंक सभी को अच्छा लग जाता है मोर और लेस. अगर नहीं अच्छा लगता, इफ यू डोंट लाइक फिक्शन, यू कैन रीड बायोग्राफीज, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ लो. चलो बायोग्राफीज बोरिंग लगता है, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ लो. आई थिंक ऐसी बुक्स जो आपको हेल्प करती हैं इन योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एनहांसमेंट एंड ऑल दैट, आई थिंक दे आर बेनिफिशियल फॉर एवरीवन. थोड़ा बहुत रीड करें and work on your vocabulary, because till the time you don't know the words, understanding things would become very difficult. And if comprehension is a challenge, then para jumbles and para completion, such advanced questions, I think वो कभी attempt ही नहीं कर पाएंगे. तो थोड़ा इंग्लिश का माहौल बनाओ अपने आसपास, थोड़ी इंग्लिश से दोस्ती करो, I would say, और उससे डरो मत. Attitudinal change की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. And I say above everything, gradually, you know, small steps every day add to big results. Right. I firmly believe in that. थोड़ा थोड़ा पढ़ो, but पढ़ो, that's important. ग्रामर पे थोड़ा methodically काम करें. Normally these people are good with grammar. आप देखना. हाँ, मतलब what I've seen is कि इस टाइप के स्टूडेंट्स कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं विद सम डिफिकल्टी, बट व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू प्रिपरेशन, दे मतलब उनको उस टाइम उस फेज में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं. तो एनी लॉन्ग टर्म एक्सरसाइजेज दीज स्टूडेंट्स शुड इंडल्ज इन? Sure. In fact, there is a significant chunk of people who are, you know, from good schools, but even they fumble a lot because interviews are such a stressful thing, right? Anybody would, you know, experience chills and, you know, nervousness and butterflies in their stomach. So the first thing is, don't you expect that miracles would happen at the 11th hour? पहले तो पूरा टाइम हमारा किस में लग रहा है, बिल्कुल रिटन एग्जाम क्लियर करने में, एंड सडनली वी वेक अप, अरे आई हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड. नाउ दिस टाइम रोहतक ने कितना टाइम दिया इन लोगों को पीआई के लिए प्रिपेयर करने के लिए? यू डोंट गेट टाइम, राइट? सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. एंड द सिंपलेस्ट एक्सरसाइजेस, रिमूव द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. मतलब थोड़ा सा अपनी कॉन्वर्जेशंस पे काम करना शुरू करो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Whether it is you attend classes, so speak to your teachers in English. Okay, grab any opportunity that you get so that you are expressive. You learn how to speak. Get a friend, usse English mein baatein karo. See, there are so many students who know English, but then they are not confident and fluent while speaking. And here in interviews, it does matter. So even if you're good with the language,
which presumably you were. That's why you cleared the cutoff, right? That's why you made it to the interview. But if you are nervous and if you are not eloquent enough, that's going to be a problem. तो थोड़ा सा शुरू से अपनी स्पीकिंग की आदत डालना होती है. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं तो बोल भी नहीं सकती 4 लोगों के सामने, it is okay. You stand in front of the mirror and just recall all that happened today. What was your day like? कुछ सिंपल एक्टिविटीज आप अपने आप को दे सकते हो और बस बोलना जितना बोलोगे उतना बढ़िया रहेगा. Secondly, finally when they'll come to the interview round, then yes, we do train our students regarding how they should project themselves. So वो वाली चीजें we can work on later on. Right. But at the moment, the most important thing is learning to speak well. That is very important. एक टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी मैंने और देखा है जब VA का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स. सो सम ऑफ देम गेट स्टक इन सर्टेन मॉक स्कोर रेंजेस. मतलब दे आर नॉट एबल टू स्कोर बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट. XX आ गए उनके मार्क्स, उसके आगे वो स्कोर ही नहीं कर पा रहे हैं. तो क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे? आर दे नॉट गुड एट RCs या आर दे नॉट एबल टू इवेल्युएट देमसेल्फ, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी मिस्टेक्स, क्या इशू है? Precisely the second one. RCs. No, evaluation. See, testing is very important. It's an integral part of your performance and the entire progress towards your results. The idea here is that when you take a test, it's natural to make mistakes and it's good to make mistakes, but it's even better to learn from your mistakes. Now, students don't really learn from their mistakes. That's the biggest problem. So they are caught in a rut. मैडम हम तो 2 मॉक दे रहे हैं, मैडम हम तो रोज 1 मॉक दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है. You write a mock every day, no point till the time you actually evaluate it well, you analyze it well, you understand what are the mistakes you are making. Try to figure out a pattern of your mistakes. That's important. अब आप same mistake है वो बार बार करे जा रहे हो, तो मतलब क्या हुआ? What did you learn? So eventually I ask my students to make a mock diary. आप एक mock में देखिए सिर्फ RC नहीं है, बहुत सारे important components हैं. There's so many different question types. A lot of vocabulary comes in every exam. Fine. Grammar. So identify करो कि मैं किस में अच्छी हूँ, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उस पर मैं ज़्यादा प्ले करूँ, उसको मैं पहले कर लूँ, और ये देखो कि गलतियाँ कहाँ ज़्यादा हो रही हैं, मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं, एंड हाउ कैन यू ओवरकम देम एंड कम अप विद अ नाइस क्लीन मॉक स्ट्रैटेजी. सो द पॉइंट इज देयर स्कोर्स आर स्टक बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग ऑन देयर फंडामेंटल्स, दे आर नॉट एनालाइजिंग देयर मॉक्स really well, and they're not learning from their mistakes. Right. Lastly, for all the students जितने भी हैं जो भी VA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, what could be 5 game changing tips for them? Game changing. All right. I would say, considering the importance of vocabulary, I would say 2 चीज़ें vocab में अच्छे से करो. Number 1, confusables कर लो, because IP MAT इंदौर में you will get 20 marks. 20 marks straight you will get from confusables. The 5 questions based on confusables, and since they are limited in number, they are not like vast. This is not general vocabulary, confusing words. तो अगर इस पे अच्छे से काम कर लोगे ना, तो 20 नंबर तुम्हारी जेब में होंगे. So work on this. Secondly, you can work on root words, because root words ke through you will learn words in a more logical fashion, and retention is also high. It's a tried and tested thing. So if you go with some root words, you'll be able to span more words, and that too in a very logical way. Number 3, solve 2 passages every day. At least if you have the appetite for more, you can do that, but minimum aap ye to karo hi karo. Okay, that is really important. Number 4, work on your grammar in a way that there are some topics which are very important, like verbs, like tenses and models. They are very important, so you good with verbs, work on that. Then subject verb agreement. Okay, so then I don't think this is the right platform where I tell you all the topics which are very important, but then those key topics of grammar, if you work them really well, you would know the errors, and then आप already grammar से comfortably काफ़ी अच्छे marks निकाल लेते हो. Right. So ये तो कुछ चीज़ें हो गई. And finally 5th,
consistency is the key. Most important. English में I have seen that, मुझे बहुत शिकायत है बच्चों से, because you know most of them are so gravitated towards quant that they keep on studying quant all the time, and English चला जाता है ठंडे बस्ते में. So उससे क्या होता है that you know when you study English for a few days and then it is like you know एकदम somewhere you know बिल्कुल एकदम कोने में पटक दिया, and for months they don't practice. So consistently if you work on your vocab, if you read something and if you keep these things in mind, I am sure by with testing आप थोड़ा थोड़ा टेस्ट भी करते रहोगे तो consistently going through it is definitely going to work a lot. Right. I think these were really good and specific strategies. I think सारे students इससे बहुत benefit ले सकते हैं. I would like to thank you for taking the time to answer all these questions. Actually, these were some of the questions that we were getting मतलब constantly हमारे YouTube comments पे. So it means a lot to all our audiences. Thank you everyone for watching this episode. If you liked it, give it a thumbs up. शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी चीज़ें सना मैम से पूछनी है कमेंट सेक्शन में डाल दो.